Our today's class is for 11th. As you know, we are learning geology. Our today's topic is geological work of underground water. The work of underground water as a geological agent done in three ways. That is erosion, transportation and deposition. So today we will try to understand what is erosion. Erosion is the process, or we can say the erosion by underground water may be done by removal of loose material by running water under the ground, or we can say on the surface the material which is removed by the running water, that is known as erosion. This erosion is to be done in two ways. It can be done in a mechanical way and in a chemical way. In mechanical way, as you know, there involves mass movement of land, that is landslides, avalanches, soil creep. You have seen that in the mountainous areas or in plains also, landslides, avalanches, soil creeps are the common things where mass movement of land involves. So this type of removal of material by running water is one of the process of erosion, that is mechanical process. So next is chemically. How chemically this loose material gets removed by the running water. Here involves decomposition of rocks. Salt deposits are easily attacked by pure water, and also water containing carbon dioxide becomes active solvent of calcareous rocks. So here water containing carbon dioxide or becomes active solvent of calcareous rocks like titanium, gypsum, calcite, fluorite. Similarly, when salt deposits get attacked by water, this running water or pure water, with the result decomposition of rocks takes place and the loose material gets removed. There are other processes like hydraulic action, abrasion, attrition, and solution, which also help in the removal of this material by running water. Hydraulic action is the process, or we can say here the loose rock fragments and soil are removed by action of water. Simple. Or we can say due to pressure of water, loose material gets removed. Similarly, abrasion is the wearing away of the sides or floor of the river. We can also say that we get by this process the geological tools such as pebbles, gravels, boulders, sand, etc., which are being transported by the river. So next is attrition. As you know, the wear and tear of these particles suffer by themselves when they are being transported. With the result, these particles, when they are being transported by the river, they uh, strike with each other. With the result, breaking down of these particles take place. They get broken, they get smoothed due to the process of transportation, and smoothed as well as they take the round shape, or we can say they get rounded. So as you have seen, boulders, pebbles, sand and other gravel particles which have changed their shapes while transporting. Solution is also a process, or we can say it is a chemical action of water. As I have already told, in what when the this running water act in a chemical way. Similarly, solution is chemical action of water. When rocks comes in contact of water and salting contacts are being dissolved. So solving those rocks which contain salt contents, the salt contents get dissolved in the rocks. With the result, the particles get loosened and gets removed and gets transported. So this is
these are the different processes of erosion if we try to understand in a simple way. अगर हम बात करेंगे जियोलॉजिकल वर्क जो अंडरग्राउंड वाटर की होती है, इसमें क्या हो जाता है, ये जो अंडरग्राउंड वाटर ये कौन सा काम करता है बहैसियत जियोलॉजिकल एजेंट। इसमें हम तीन चीज़ें लेते हैं, एरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। पानी की वजह से ज़मीन के अंदर जो पानी होता है या सरफेस पे पानी हो जाता है, इसकी वजह से एरोजन हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन यानी मटेरियल एरोड हो जाता है, यही मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहीं और, जब दूर तक जाता है तो ये मटेरियल किसी दूरी पर डिपॉजिट हो जाता है। जब हम एरोजन की बात करेंगे, एरोजन जो अंडरग्राउंड वाटर की वजह से हो जाता है, इसमें हम कहते हैं कि ये रिमूवल ऑफ लूज मटेरियल, रनिंग वाटर की वजह से जो लूज मटेरियल रिमूव हो जाता है, एक जगह से जाता है दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होके जाता है फिर डिपॉजिट। इसको हम मैकेनिकल वे में डिफाइन करते हैं और केमिकल, दो तरीकों से ये हो जाता है। अगर हम मैकेनिकल की बात करेंगे, इस मैकेनिकल में इन्वॉल्व हो जाता है मास मूवमेंट्स ऑफ लैंड, जैसे आपने सुना होगा लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस, सॉइल क्रीप, डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोसेसेस हो जाती है, या कहेंगे हम कि इसमें जो जैसे हमने देखे पानी की वजह से कहीं लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, एवलांचेस हो जाते हैं, या सॉइल क्रीप, मिट्टी के बड़े बड़े तोदे गिर जाते हैं। इसको हम मैकेनिकल वे ऑफ लूजनिंग ऑफ मटेरियल बाय रनिंग वाटर और रिमूवल ऑफ लूज मटेरियल बाय रनिंग वाटर कहते हैं। ये मैकेनिकल तरीका है। इसमें अगर हम केमिकल तरीके की बात करेंगे, केमिकल तरीके में आपको पता है इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है केमिकल्स की, पानी के साथ जो केमिकल्स मिल जाते हैं फिर रॉक्स को डिकम्पोज कर, या रॉक्स में ऑलरेडी जो साल्ट डिपॉजिट्स होते हैं या ऐसे कैल्केरियस मटेरियल होता है, उसको ऐसा वाटर जिसमें ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो वो उसका एक्टिव सॉल्वेंट बन जाता है, विद द रिजल्ट रॉक्स गेट्स डिकम्पोज। चाहे कैल्केरियस मटेरियल हो, सॉल्ट डिपॉजिट्स हो, या बाकी एसिड्स वगैरह जो रॉक्स में मौजूद होते हैं, उनके लिए पानी एक एक्टिव सॉल्वेंट बन जाता है, विद द रिजल्ट दे गेट डिसॉल्व्ड, रॉक्स गेट डिकम्पोज, जो और ये मटेरियल जो होता है ये लूज हो जाता है और रनिंग वाटर के साथ रिमूव हो जाता है, फिर कहीं दूर ट्रांसपोर्ट होने के बाद डिपॉजिट होता है। ये केमिकल एक्शन की वजह से हो जाता है। इसमें प्रोसेस है हाइड्रोलिक एक्शन, एब्रेजन, एट्रिशन और सॉल्यूशन। हाइड्रोलिक एक्शन एक ऐसी एक्शन है जिसमें पानी का प्रेशर काम करता है, किस चीज के लिए, इस सॉइल या रॉक फ्रेगमेंट्स को रिमूव करने के लिए। इसको हम एक्शन, वाटर एक्शन कहते हैं, जिसमें पानी अपने प्रेशर की बुनियाद पे सुराखों से, क्रैक्स से, छोटे छोटे मिट्टी के दाने या रेत के दाने, छोटे पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स या सॉइल पार्टिकल्स को रिमूव करता है पानी की प्रेशर की वजह से, उनको एरोड करता है, उसको हम हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। इसी तरह से एवरेजन की बात करेंगे, इसमें वियरिंग अवे ऑफ, दरिया जब बहता है तो वो साइड का मटेरियल और फ्लोर का मटेरियल अपने साथ ले जाता है, काटता है, दरिया साइड्स को भी पानी काटता है और बीच जो फ्लोर होता है उसको भी काटता है, विद द रिजल्ट ये जो एवरेजिंग टाइप ऑफ प्रोसेस है, इसमें हम जियोलॉजिकल टूल्स की जब हम बात करेंगे, जिसमें बोल्डर्स, पेबल्स, सैंड, ग्रेवल्स एंड बाकी बाकी चीज़ें ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं रिवर। जैसे आपने देखा होगा कहीं मैदानी इलाके में भी हम रेत निकालते हैं, बाजरी निकालते हैं या बाकी चीज़ें, क्योंकि ये कहाँ से, पहाड़ी जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं, अब उनको रिवर का पानी उन पेबल्स, जियोलॉजिकल टूल्स को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करा के मैदानी इलाकों में लाता है, जो हम हासिल करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्रेजन। इसी तरह से जब हम एट्रिशन की बात करेंगे, इसमें वियर और टियर होता है इन्हीं पार्टिकल्स का। ये जो पार्टिकल ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, दे सफर बाय देमसेल्व्स, एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से। ये ट्रांसपोर्ट होने के दौरान एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से टूट जाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, इनमें राउंडेडनेस आ जाती है। नंबर तीन, और अगर हम इनको देखेंगे, इनमें स्मूथनेस इन पार्टिकल्स में, जैसे आपने पेबल्स,
बोल्डर्स देखें उनकी शेप का सर्कुलर है, वाइल एज ये रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं जो पहाड़ी इलाकों से आते हैं, रॉक्स से आते हैं, फिर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट दे सफर दिस by striking themselves with each other and they get broken down, smoothed and rounded. तो सिमिलरली जब हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, ये एक केमिकल एक्शन है पानी का जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसमें क्या हो जाता है, रॉक्स कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर। जब रॉक्स, कौन सी रॉक्स, स्पेशली दोज रॉक्स विच कंटेन सॉल्टिंग कंटेंट्स, जिनके पास सॉल्टिंग कंटेंट्स या ऐसे कंटेंट्स है, एसिड्स है जो डिजॉल्व हो जाते हैं पानी में, या जब पानी में कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी मौजूद हो तो एक एक्टिव सॉल्वेंट बन जाता है, बाकी जो साल्ट्स हैं या कैल्कियस मटीरियल है उनको डिजॉल्व करने में, जो कि रॉक्स में ये सभी चीज़ें मौजूद है, सो इनको डिजॉल्व करके रॉक्स के पार्टिकल्स को लूज करते हैं, फिर उनको रिमूव करते हैं पानी, ये पानी जो है उनको रिमूव करती है, अपने साथ ले जाती है, ट्रांसपोर्ट करती है। सो ये भी एक सॉल्यूशन, भी एक केमिकल टाइप ऑफ प्रोसेस है इस एरोजन, व्हाट एरोजन, सो जो एरोड करता है, मटेरियल जो एरोजन करता है, ये these were the so different processes, or we can say erode as an erosive agent. Water can be done either mechanical, water can remove this loose material either in a mechanical way or in a chemical way, or due to different actions, hydraulic action, abrasion, attrition. So these were the different processes by which underground water remove loose materials. So this was regarding the geological work of underground water, and we have discussed it here only erosion. आज हमने सिर्फ erosion कंप्लीट किया है, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रांसपोर्ट और डिपोजिशन का देख लेंगे।